We have Fatima Sakhawat with us, who has been here in Germany for around 7 years. She has been linked with the field of recruitment and HR and has kind of a diverse experience. So Fatma present कर रही होंगी अपनी insights according to CV and then interviews. Then we have Mohammad Zeehsan with us, who is an MIT graduate और जिनका भी बड़ी कंपनीज BMW और गूगल के साथ एक्सपीरियंस रह चुका है, तो वो भी नेक्स्ट हमारे एज अ स्पीकर कुछ अपनी एसेंशियल इंसाइट शेयर कर रहे होंगे. और वी हैव जवाद ताहिर एज वेल, हु हैज आल्सो वर्क इन अ लॉट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, जो कि हमें Q&A सेशन में काफी गाइड कर रहे होंगे. So I hope we can start it formally now. Fatma, I would like कि आप स्टार्ट करें सेशन को and I'd proceed for screen sharing. Assalamu alaikum, everyone. Am I audible for everybody here or not? I guess you are audible. Okay, perfect. Yes, so thank you very much, Jawad, for doing a quick introduction. Welcome and thank you everybody for taking the time out on a Sunday. I know that I will really try to make my presentation quite crisp and brief so that you're not getting bored on a Sunday. Let's get right into it. Over the last couple of years, I have worked with a lot of different companies, different cultures, and what I've basically compiled for all of us today is some really, I would say, quick wins, and also some must-haves and some no-goes, I would say. So I would say that as you all would be in the process of looking for student jobs and internships, and also since the year is coming to an end, and that January itself is a very high season for recruiting. So I also would say that it's really like the correct time to get your CV polished, to get your CV reviewed by a friend or a senior or someone, and also to start to shortlist companies where you want to potentially work, and so on. So you currently would be in the process of doing so, I thought that it makes a lot of sense कि मैं आप सबके साथ जो German CVs के जो कुछ must haves होते हैं from a perspective of a recruiter or an HR professional that I can share with you. And I would say कि ये जो मैंने summary बनाई है, it's basically based on a lot of errors that I saw over the years in the CVs, जिससे basically I would say कि एक impression जो first impression होता है वो अच्छा नहीं जाता, or because of some logistical reasons and so on, recruiters and hiring managers, they also prefer not to go with such candidates. So German CVs there's a bit of a difference if you compare it to, for example, a CV that is used in the US, in UK, or even in Pakistan. So you might find it interesting, but because Germany is all about data protection, but a personal picture, that's a must. So I do see a lot of CVs where sometimes the pictures are missing, but first and foremost, it's really important that you put up a very nice and crisp picture of yourself, जिसमें सिर्फ आप हो, बैकग्राउंड में कोई आपके फ्रेंड्स या फिर कोई irrelevant बैकग्राउंड ना हो, because the first impression, it really matters a lot. आपके फीचर्स विजिबल होने चाहिए, आपका जो attire है वो at least it should be business casual. Like I would personally not put a CV picture that जिसमें मैंने t-shirt पहनी हुई है with a lot of cartoons or something. So anything that's simple, that's basic, and that's semi-formal would work. So the second must-have for a German CV is I will also show an example later on, but just over the top of your head, these are the things that are absolutely must-haves. So आपकी जो contact information है, that should be really complete and correct, because sometimes it does happen. I have seen a lot of candidates from Pakistan जो अपना पाकिस्तान का number देते हैं, which does not work in Germany, just by the way. तो उसके लिए you have to really give if you want to be reached by phone, because according to law a company cannot reach you unless and until you've specified it.
So you must specify कि you can be reached by phone by giving the correct phone number. वो आप बता सकते हैं वहाँ पे. Then your email address should be correct. Um, when I'm talking about email address, I know it's kind of like in-depth detail, but try to have an email address that's formal, and that's not something that you would use, for example, in high school with your nickname or with your, I don't know, any like koi like Spider-Man nickname or something of the sort. So please make sure that it's formal, and it's something that you would feel comfortable sharing with someone that you want to work with. Then the third and most important part is how you specify or jot down your past roles. So some of the must-haves when it comes to this section is you should definitely write down your title, the company where the title was held, the duration of this role, where it took place, like the location. Was it in Pakistan? Was it in Germany? Was it somewhere in Europe? And then, of course, you also would have to write down the description. I think that when I talk about description, that is the most critical part of a CV itself. Sometimes students, they write too much as if they're writing an essay, or sometimes they write too little. But in my experience, a good compromise is when you write not more than 3 or 4 bullets for one particular role, because you're a student, and you also have to follow like a specific length for the CV, which should not be more than 2 pages at max for a student job. So आपने 3 or 4 आपने bullet points बनाने, which should basically start with action verbs and command words. उसकी एक बकायदा list है that I'm happy to circulate in the group afterwards that you can use. But I will just give me in like 10 minutes, I will also give you a quick overview about what do I basically mean by command words and action verbs. So the main idea to write a good role description is that it should show some impact and scalability through numbers. So, for example, how did you increase, decrease, or modify something? So, if you help to reduce costs by 10% for a certain project, you should mention it. If you increase revenues up to a certain percentage, you should mention it. So basically, a good CV always shows impact. So it takes a bit of practice, and you can write things down and have your friends review it. But any good CV that I have seen in my last 7 years here, it always shows a good impact on the product deliverables and variables. Then further on, I think one thing that's most relevant and most, I would say, crucial for us at this point as students is that you must also mention your education. So, for example, you should mention कि आपकी degree start कब हुई और आपकी degree end कब होगी. You can write in brackets that expected graduation date is this. तो आप वो वहाँ पे लिख सकते हो. Then अपनी degree का नाम आप ज़रूर लिखो. अपनी university का you should definitely write it. And then you should also write the main courses. Sorry, I see a typo in my own presentation, but what I wanted to say here is that it should be according to the job itself. So let's say you're applying for a working student role in embedded systems, right? So, and if you take like a course related to embedded systems or anything similar, or if you took if you're applying for a role in robotics, and you did like a course in robotic systems या कुछ, you should definitely try to have like this alignment कि आपने जो पढ़ा है, how can you basically apply it to the job as well. So I think this is a very very important thing, especially जब आपके पास relevant experience नहीं है और आप basically आप working student jobs वगैरह के लिए apply कर रहे हैं. So I would say that this is really crucial for all of the students who are here जिनका पाकिस्तान में इतना relevant experience नहीं है, and so on. Then another important thing that is very crucial for German CVs is के आपकी certifications. For example, I see a lot of students जिन्होंने like
through Udemy, या फिर like Harvard online courses, MIT, Stanford, they have often, done some certifications in their free time. So you should always, of course, mention that, and then also the institution where you did it from, if it was an online course or if it was something that was held in person. Same goes for the language skills. So for example, अगर आपका English का जो है, you consider yourself to be business proficient in English. So you should also, for example, अगर आपने IELTS वगैरह दिया हुआ, you should also probably mention that. Then at the same time, you should also mention, if you're doing German, तो आप किस institute से कर रहे हो, if you're doing it through your school and so on. Then lastly, accolades. Basically, if you think that there is something that you have done that's really interesting and impressive, but it's also relevant to the job, then you should definitely also mention it in the skills or, accolade section. One more thing that I often see is missing, which is a standard for most German CVs, is that most German CVs, they're numbered. So for example, when you're applying through an external portal, or there's like some translation error, जब आप कोई PDF वगैरह भेजते हो किसी recruiter को, कोई page missing होता है या कुछ, and they see कि okay, एक तो CV का एक part ही totally it's not there, it's something that's totally missing. So then, they can reach out to you, okay, hey, the CV, the attachment is faulty, it's not working. So it's always a good precaution to have something that's always numbered. I will, in the next slides, I will also show you how this can look like in reality. Or lastly, but also the most important thing, because in Germany we have a lot of like data protection and so on, it's really crucial that you also sign the CV at the very end, with like a date and place where you basically sent it from. Then lastly, the CV language. Oftentimes I see that a lot of CVs are received in German, but improper German. So it's really not correct. But just because you're applying to a German company, unless and until otherwise stated कि आप अपनी CV German में ही भेजें, then it's totally also okay if your CV is in English, but it's correct English. So, but if the role says, okay, please send your CV in German, then of course you should send it in German. But at the same time, it would then also maybe the expectation कि आपको German बोलनी भी आती है. So, I mean, it's kind of like tricky, but it's advisable, at least for this point, for all of you to send the CV in good English skills. Yes. Jawad, can we move on, please? Yes. So these are basically a lot of common mistakes that I see that I think that are absolute no-goes, that I think that all of you should definitely take a second look at. First and foremost, what I see a lot in, I would say, mostly, I don't mean to like generalize, but a lot of CVs that I receive from students, they have a lot of spelling and grammatical errors. So this is something that's already kind of leaving, a not so positive impression for the recruiter, because it shows that you don't have like a good attention to detail, that, you don't double check your work, that, you're a bit careless, or that you don't simply know how to spell or how to like, write a sentence that's in correct grammatical form. So it's really crucial that you take like a double look before you send anything. And then at the same time, you can also use so many different tools like AI tools. You can also use like these softwares called Grammarly, Quillbot, and so on, to have your spellings and grammatical errors corrected. So I would say that's really, really important. Another thing, which is also very crucial from a legal perspective, is that all the information that you're giving in your CV, it has to be true. So it has to be correct. I do have had some experiences where students have been, or even like I would say other candidates, they have been trying to oversell themselves,
And when like a company does like a background check, and then they realize, okay, they never had this position in this company, or they never worked there for this very time duration. So in very extreme cases, it could also be that you get like red listed from applying to any jobs, and so on as well. So it's really crucial कि आप जो भी information दे रहे हो, it's really correct and it's true, and you're able to also justify it when you're speaking to the recruiter. So आपकी information valid भी होनी चाहिए साथ साथ. Thirdly, what's really crucial is that you should also check if you're adding, for example, any hyperlinks, like a link to your LinkedIn profile or your GitHub profile, or any personal website or so on, or any attachments like a work portfolio, a cover letter, any past like work references and so on. So all the attachments, all the websites and hyperlinks should be functioning in a PDF as well. So maybe you want to just quickly ask your friend to double check it for you. So that's really crucial, because if the recruiter wants to access something and he or she is not able to, they will not come back and ask you to send the correct link. They will just simply not proceed with you, because a recruiter on average does not spend more than 1 minute to look at one CV, because we receive so many CVs that it's just not possible to spend like 10 to 15 minutes just reviewing one CV. So if I want to quickly, you're applying for a technical role, and I simply want to go and I want to look at your GitHub repositories, and the link is not working, then I will simply reject you. I don't have the time to go and ask you for another link or something. So from your side, it's really crucial that you're really mindful of this. दूसरा, sometimes what I also see is, which I think it's a quick fix, is कि आपकी the personal information should be correct. So for example, आपका email address, आपका जो phone number है, if you want to be reached by phone, then that should also all be correct. Otherwise, it's also really frustrating for the recruiter, and then they will not like reach out to you to like get this information a second time. Um, Lastly, what I would say is, it's really crucial कि आप properly अपने CV के जो numbers हैं, CV के जो pages हैं उसे number करें, or you should definitely give something that can be identified as you, for example, a personal signature. Yes, so these are some things that I can recommend you to be really mindful of when you're creating your first German CV here. Jawad, can we please move on to the next set of slides? Okay, perfect. So I brought with myself a quick example of what a German CV could look like. So as you can identify, there's a good picture. It's visible. It's a business casual picture. The background is clear. Her features are visible, and it looks like a decent picture as well. Then at the same time, the name is there. The current title is there. Then the personal information is also there. For example, her phone number, her date of birth. By the way, date of birth can also be added in a German CV. Unka LinkedIn, her email address, and also the location where she's present at currently. Then there's also the part about the career history. You can see it clearly identifies कि क्या duration थी from October 2017 to present, which means that she's still currently working in the role. Then जो current जो job title था वो, that's also given there, along with the location, which is Madrid, Spain. And also, one thing that I do like about this CV is that it gives a quick insight about how big was the company. For example, 50 employees, or जो main जो company की जो industry थी, it was internet within the IT sector. So this is not compulsory, but if this is something, this is something that can also be added on top. Then if I look at like other things, I also see quite some action verbs. So for example, she's starting every sentence with a different word.
So in the first bullet, she's talking about managing a 2.9 million program that replaced the legacy billing. So you can basically see here, okay, she uses an action verb along with a number that helps us to quantify, okay, what was the impact of the work that she was doing. And at the same time, she also uses like different action verbs for every different bullet point, and they all reflect a different side of the task that she was working on. So I can also recommend you to have like a similar approach when you are drafting the role descriptions for your respective CVs. Then you can also see that it's everything is set out in a very chronological way. So the most recent thing that she was working on, that's at the top, और उसके बाद like उससे पिछला जो role था from January 2014 to September 2017, वो उसके बाद आता है. So that's what we have to do, कि जो basically सबसे जो मोस्ट रीसेंट जो होती है आपकी जॉब, वो आपने सबसे ऊपर लिखनी होती है, और उसके बाद जो आती है वो नंबर सेकंड पे, उससे पहले जो थी वो नंबर 3 पे, एंड सो ऑन. One last thing that I would like you to look at on this page is like जो मैंने नीचे एक वो footer डाला हुआ है, page 1 of 2. So this basically shows कि CV में in total there are 2 pages, and this is essentially the first page. In case कि कुछ when you're applying or कुछ technical glitch होता है or something and you miss something, then there's a high probability कि the recruiter can reach out to you, okay, your CV is not complete or we cannot process it or something, so can you please send like a complete CV to us or something. One more thing that I would like to maybe take note of here is that the CV, the amount of information and the amount of text, it's really good. In a way that there's not too much text. It's not like कि किसी ने पूरा एक essay लिखा हुआ है. There's also enough white space between lines. Okay, it's easily readable. Like for example, imagine that you have to read this CV on a computer screen, and you can still read it with ease. Okay, there's not like too much information and so on. Yes. So can we move on to the second page, please? Exactly. So, like I was saying, that everything has to be in a chronological manner. You can also see that she's continuing where she stopped working in September 2017. Usse pehle, all the jobs that she had, she has clearly mentioned them in her career history or employment history. Then another important thing is that the section about education, she has clearly stated when her degree started, when it ended, also where the degree was. It was at Nova University of Lisbon. Then it was a Bachelor of Science and Business Administration. And she also does give like some information about what she did, but here I think it's really important that you all use this part to make it more aligned with what you're working on. Studying what you're studying at the current degree program, and how it can be relevant for the job that you're applying for. So in some cases, it's also okay if you want to put this education part before the career history. If you feel like कि आपका जो career, आपके जो past experiences हैं professional in Pakistan or anywhere, if you think they're not very much in line with the job that you're applying for, then you can simply take the education section and put it right after your personal information. So that's essentially the first thing that the recruiter will see, and they will be interested to read more. Then lastly, she has also mentioned like some certifications. For example, she did like some certifications for strategic thinking from LinkedIn, for project management, and she also did like some SAP certifications. So basically the idea here is कि इसको भी आपने chronological क्या कहते हैं flow में लिखना है.
The most recent ones being at the top, and then like the one that you did after, sorry, before that, or usse pehle and usse pehle. You should really explain like the title of what it was, where it was from, and when did it happen. So you can even add up to like 4 to 5 certifications, but given that they're very relevant to the job that you're applying for. Then languages. It's also a very important part of any CV, I would say. So you can basically write your native language, your English fluency level, German का भी आप लिख सकते हैं, or any language that you would speak. But I would always put the most relevant language, that could be English and German, at the top, and then Urdu or Punjabi or Hindi or Arabic or anything of the sort. So it's good to also, I would say, write them, because it does show, okay, in case the company that you're applying for, it's diverse in cultures and nationalities, that you would have like good touch points with the rest of the colleagues as well. So if for example आप German पढ़ रहे हो, तो you can also mention के what institute are you actually studying it from. So that's also a good touch, I would say. Lastly, there is the signatures at the bottom right. So you should, of course, like add a signature. You can add it by using PDF, or you can also like, take a picture and then insert it. But it should, of course, like have your name mentioned out clearly. And then at the same time, it should also specify the date and the place where you actually are sending the CV from. And lastly, as like the last footer, you should of course identify that this is page 2 of 2, which means that the CV is complete and nothing is missing. So yes, I would say that's basically what the German CVs would look like. Going step ahead from CVs, once you have sent your CV, it can take up to like, I would say, depending on how big the company is, it can take even up to a month to hear any kind of feedback from the recruiter, from the company itself. And once you basically receive a positive response, the next step in the process is naturally to have an interview. In my experience, German interviews are very different to interviews that are conducted in the US, in Canada, in UK, and even in Pakistan, because I would say they are quite different in some approaches. They're quite lengthy as well at times, and they are looking also at quite different things and so on. So एक जो नेचुरल कंपनी का जो इंटरव्यू या फिर रिक्रूटमेंट साइकिल होता है, उसमें on average 3 to 5 rounds होते हैं of interviews. If you are, for example, interviewing for a startup, I don't think there would be more than 3 rounds. Sometimes there are also even just 2 rounds. But for example, if you're interviewing for a corporation like Allianz or I don't know, like Boston Consulting or McKinsey or something, then surely there will be a lot of different interviews that you can expect. So within the interview rounds, there are different types of interviews. The first interview always is a recruiter or an HR call. Then there is the technical, and when you pass that, then there's a technical interview to take a deep dive into कि आपके technical role specific skills क्या हैं. They can do that by giving you a case study, जो कि आप like you have to work on the case study and you have to like then send it back. Or you could also, they could also just basically call you and then try to have a discussion around some technical topics or role specific topics that are currently going on in the team. Then this is then the third interview, which is essentially the stakeholders interview, and this is something that you would commonly find in like bigger corporations and so on. So for a startup, it's not that common to have this round, but for instance, आप अगर किसी corporation में apply कर रहे हैं,
and you get an interview, then this will probably be an important step. And for most of the interviews, there's a last step, which is for startups only. You will definitely have a chance to speak to the co-founders or the CEO and so on. If you're applying for a corporation, then they will definitely not have this round. But in place, you might have a call with the head of department or something. In my opinion, the most critical interview stage in everything that I've explained so far, it's the recruiter or the HR call, because that basically determines if you will be invited for a next round or not. And that basically the main motivation for a recruiter call is to evaluate if you're a good culture fit for the company or not. And I think that's where a lot of German interviews have a different approach, in a way that they always look at, culture fit hai ki nahi. What do I mean by culture fit? Culture fit is essentially, I would say, how companies try to look at you holistically as a person. आपकी personality क्या है? How can they envision you working in their team, or on the vision that the company has, or really like being aligned with the values that a company has. So every specific company has its own culture, and the first interview or the first recruiter or HR call is essentially there to identify if you're a good culture fit for the company or not. And for most of the companies, that's also where the rejection rate is the highest. Because if you're not a good or the appropriate culture fit for a certain company, then the chances of you moving on to the next technical interview or the case study interview, they're very, very slim. Yes, so I would like to now maybe go a bit more into detail about, how you can perform well in a recruiter interview. So there are some things that are absolute must-haves. Why are they must-haves? Because um, every recruiter or every HR manager, they will surely ask you about all these things, because these are the things or the questions that are helping them to understand or evaluate your culture fit to their company. So, how to essentially ace a recruiter or an HR call? The first thing that I can not emphasize enough is to prepare, definitely, because I have, in the last 7 years, I have spoken to so many people who are there and who have no idea about the company that they applied for, no idea about what the company is doing, who are the competitors, what the product is, what's the team size, what's the industry, and what is the problem that they're trying to solve. So one thing that I can surely recommend is go to Google, look for a business model canvas, download that template, and then go to the company where you are interviewing and simply try to fill out the business model canvas. This will really allow you to have a very good picture and information to talk about and give to the recruiter when you're having your first call. So there will be no awkward pauses. There will be no awkward silences. The recruiter is asking you, hey, what do you know about your company? And then you're saying, okay, I didn't have the time to look into it, and so on. But once you have like this information, you can surely go ahead and start to speak about, this is what I know, and it will definitely leave a very good first impression, I'm sure. Then one other, I would say, trick is to simply go to the company page on LinkedIn and try to look at the most recent posts, or most recent activity that the company is conducting. It could be that they had a funding round. That's something you can very casually bring up in the interview, and so on. Then you should also look into your interviews, the person that you're speaking to. So whenever you will get like an invitation for an interview, you will know कि आपने बात किससे करनी है. So just to like make yourself more familiar with your interviewer, I will really recommend that you go and you look them up on LinkedIn to see what they're doing at the company, how long they have been there,
how did they progress, and also maybe try to write down some questions you would like to ask them. And so basically, these are the three things that can really help you to ace this question, which is which is in the last 7 years, it has been really the second or the first question after, like, welcoming you to the call and so on. So they will always ask you, what do you know about our company? So once you have all this information and you share like a lot about, that you do know about the company, it will certainly leave a very, very good impression that it would really set the correct tone for the entire interview itself. The second most crucial part is, and I think it's really, really important for the German companies, it's really to understand your motivation. Um, a lot of a lot of candidates, I would say, they don't get this right because they're just not being honest and open, I would say. So it's really important to maybe sit back and ask yourself, okay, why am I motivated to work for this company, and why am I motivated to work in this role? So it's really about, taking some time before the interview to write some things down to understand very clearly and precisely on your why. So that would really help you to bring more clarity to this question about motivation. That why do I want to work for this very company and not any other? Then maybe to just like get more thoughts around this area, what I can highly recommend is you definitely should aim to align your motivation with the company values. When you go to a company page, you can definitely see that all companies have a set of core values that they work with. So अपनी motivation को उसके साथ मतलब parallelly लेके चलने की कोशिश करें, उसको साथ साथ लेके चलने की कोशिश करें. It will definitely help you in the interview process itself. Then one more trick that I can share with you is कि आपके जो past experiences हैं, go to the job description where you applied and make a list of your past experiences as well. और इन दोनों को against one another try to match it. कि अच्छा मैंने वहाँ पे अगर I worked in project management, यहाँ पे project management भी है, तो I can maybe say कि okay, that's what I learned. That's what I learned there, and then we can have like this comparison. Or in the same way, you can also ask about your recent courses and your recent studies as well. And you should also always try to build up a good conversation by asking a lot of follow-up questions to the interviewer as well. Then quickly to wind things up, I think oftentimes what you do get asked is, how did you react in a challenging or unexpected situation? So a lot of students, they do get confused when they're asked about these things. So basically, I think it's crucial to have maybe like something that's like pre-thought, or matlab soch ke rakhein, like if something like this will be asked, what can I answer? And to effectively maybe organize your thoughts, you can use the STAR technique that's very broadly used by Amazon, by Google, also by Microsoft. Okay, you can simply also talk about what situation was so challenging, what did it require you to do, what action did you take, and what was the outcome. So the STAR technique, like situation, task, action, and result, it's really it can come like real handy if you look at it this way. And then I would say that lastly, don't panic, but just like if someone asks you a difficult question, like the recruiter asks you a difficult question, you can just say that, can I please have a minute to think about it, and then respond, rather than just like saying something that you don't know what you're talking about. Then lastly, the closing is really important. I see in many cases that students, they don't ask any questions at the end, and it really shows the lack of interest and motivation. So it's really crucial कि आप कुछ questions जो हैं about the company, the role, the tasks, and so on. You definitely should have at least two really good questions that you want to ask.
then at the end, you can also ask about, hey, what the next steps would look like, and when, you can expect to hear back from them. And lastly, I think it goes without saying, but that's something that a lot of people do forget. It's still like a formal meeting, so don't forget to be courteous. Thank them for the opportunity, and just in one or two lines, really reiterate that you're really interested and that you would love to hear back from them. And so yes, I think that's it from my side. Later on, if there are any questions, I would be open to answering them. थैंक यू सो मच फातिमा. आई वुड से कि आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ों को समराइज कर दिया है इस सेशन में. तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी हम सबके लिए, लाइक नॉट जस्ट फॉर वर्किंग स्टूडेंट जॉब. आई गेस इट वुड बी बेनिफिशियल in searching for a full-time professional job as well. So means a lot. Thank you so much for your participation. Now Thank you, Jawad. And yes, I think we should move on to the next speaker. yes. Now मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद ज़ीशान जो है हमारे सेकंड गेस्ट स्पीकर वो कंटिन्यू करें और क्विकली अपनी इनसाइट्स में शेयर कर सकें. थैंक्स. All right, thank you so much. I hope I'm audible. सब मुझे सुन सकते हैं. So yeah, I guess I have like 15 minutes. तो इसमें मैं कुछ insights आपसे share करना चाहूँगा. So first of all, just about me, मैं म्यूनिक में 10 years से तकरीबन रह रहा हूँ, और मैंने अपना जो है वो कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया है, और कुछ डिफरेंट कंपनीज जैसे इंटेल, एप्पल, हुआवे, सैमसंग और डिलॉयट इनके लिए काम किया है. So let's quickly jump into the different tips and tricks about resume. और चूंकि I really liked फातिमा सेशन, क्योंकि वो एक HR प्रोफेशनल है, तो वो उस लिहाज से आपको बताएंगी. मैं चूंकि एक एप्लीकेंट हूँ जिसने डिफरेंट कंपनीज में काम किया और अप्लाई किया, तो मैं आपके पर्सपेक्टिव से आपको बता सकता हूँ कि अप्लाई करते वक्त हम लोगों को क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. ठीक है. So what I'll do is I'll shortly maybe share my screen so that you could just quickly see what I'm trying to present here. Okay, so just a moment. Yeah, let me share. Okay, so all right. Okay, so can everybody see my screen? Yep. Okay, perfect. So what we can do is we can do a short slideshow. Okay, so first of all, हमारे पास एक जो चैलेंज है वो ये है कि जैसे फातिमा ने डिफरेंट टिप्स दी कि रिव्यूइंग अ सैम्पल रिज्यूमे, सही है. सो शी गेव टिप्स टू यू. सो व्हाट आई विल डू इज कि हम एक रिज्यूमे को देख लेते हैं. ठीक है. सो लेट्स सी, दिस इज अ रिज्यूमे. ये मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजी है कि जी ज़ीशान इसको प्लीज़ रिव्यू कर दें. सही है. सो हम शॉर्ट 3 मिनट्स में इसको रिव्यू करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. आई होप एवरीबडी कैन हियर मी. फॉर एग्जांपल इन्होंने अपना जो है ना शुरू में ही कुछ चीज़ें बताई हैं. ठीक है, कि माई नोटिस पीरियड इज़ नन, आई एम एबल टू रीलोकेट, और इस तरह की चीज़ें. ठीक है. और इसमें हम ये देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो मिस्टेक है वो ये है कि इन्होंने अपना ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है आफ्टर एज 1. ओके, सो दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस. सही है. ये इनके नाम पे होना चाहिए sn.riaz@gmail.com या sn.riaz समथिंग एट live और outlook.com. तो ये एक अच्छा ईमेल एड्रेस नहीं है. ठीक है. इसी तरह इन्होंने अपनी टेक्निकल स्किल्स में कोई 20 टेक्निकल स्किल्स लिखी हैं. ठीक है. हम भी ये कहते हैं कि आप लिखें अपनी टेक्निकल स्किल्स, लेकिन जब आप इतनी सारी लिख देते हैं ना, तो फिर आप किसी एक चीज़ के एक्सपर्ट नहीं बनते. इंसानी दिमाग जो है वो तकरीबन 7 चीज़ें रिमेंबर कर सकता है. तो आप 7 तक रखें, 8 तक रखें, उसको बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं. ठीक है. अगर आप बहुत ज़्यादा स्किल्स मेंशन करना चाहते हैं तो उनको अपने वर्क एक्सपीरियंस के साथ कपल अप करें कि मैंने जिस प्रोजेक्ट में काम किया उसमें मुझे ये स्किल मिली, ताकि रिलेट भी कर सकें लोग कि अच्छा ये स्किल किस प्रोजेक्ट में इनको मिली थी. सेकेंडली, इन्होंने बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे कि ब्रैकेट्स इस्तेमाल किए हुए, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, फिर ये पाइप, फिर ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज. उसकी वजह से ये पैराग्राफ पढ़ना इतना मुश्किल हुआ है. तो रीडेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसे फातिमा ने मेंशन किया कि इनके पास मैक्सिमम 1 मिनट होता है एक
एक रिज्यूमे पढ़ने के लिए, तो 1 मिनट में तो मैं ये सिर्फ यही लाइन पढ़ सकूंगा, बाकी की तो रिज्यूमे नहीं पढ़ सकूंगा, ठीक है। सो ये चीज़ होती है कि आप इस चीज़ को क्लियरली प्रेजेंट करें, टेक्स्ट का एक फ्लो होना चाहिए, मतलब जो इंग्लिश आप लिखते हैं वो इंग्लिश में इतने सारे स्लैशेस अगर आप लगा देंगे, इतने सारे ब्रैकेट्स, इतने सारे 4 3 2, ये समझ में आने से ऊपर है और ये एक हेडेक कॉज करता है, ठीक है। थर्डली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेटिंग बड़ी अजीब सी की हुई है कि राइट पे कुछ बुलेट्स अलाइन की हुई हैं, कुछ लेफ्ट पे अलाइन की हुई हैं, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि डिफरेंट चीज़ों को अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब कि और कहीं पे बोल्ड है, कहीं पे स्पेस नहीं है, जैसे टू और एस के बीच में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स जो होती हैं, देखें आपके जॉब इंटरव्यू में अप्लाई करते वक्त आपका ये वाहिद कागज़ का पेज होता है जो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वो आपसे कभी मिले तो नहीं है ना रियल लाइफ में। तो अगर कुछ लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने तो इतना काम ही नहीं किया, हम रिज्यूमे में लिखें क्या, हमारे पास तो बस हमने अभी 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 डिग्री पास की है, अभी अभी हम अपने यूनिवर्सिटी में आए हैं। तो व्हाट आई टेल देम इज कि ये रिज्यूमे जो है ना, ये आपकी एक आउटलुक देती है एज अ प्रेजेंटेशन एज वेल, इट्स नॉट जस्ट द नॉलेज एग्जिबिटेड ऑन द रिज्यूमे। ये जो कुछ लिखा हुआ है, इसके अलावा इस कागज को देख के भी मैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बता सकता हूँ कि आप स्पेस को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, आप कितने ऑर्गेनाइज हैं, कितने डिसिप्लिन हैं, आपका तजर्बा कितना है, ये सारी चीज़ें मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब इन्होंने डिफरेंट जो चीज़ें लिखी हैं, ठीक है ना, तो उन चीज़ों को लिखने के अंदाज से भी मुझे पता लग जाता है कि ये जो है ना कितना सीनियर बंदा है, या ये क्या चीज़ जो है ना वो फॉर एग्जांपल रखता है अपनी एबिलिटीज़ में, ठीक है। तो अगर हम इनको अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये हमने एक शॉर्ट सा एक ओवरव्यू लिया है कि ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी रेज्यूमे कैसे बनाएं, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज़ होती है overleaf.com करके, ठीक है। आप अगर overleaf.com पे जाएं तो आपको एक वेबसाइट मिलती है जहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक टेम्पलेट्स की वेबसाइट है जहाँ से ओवरलीफ के टेम्पलेट्स मिलते हैं, और इनको आप यूज़ करके अपनी रेज्यूमे अच्छी तरह बना सकते हैं। तो इनमें से फॉर एग्जांपल मैं अगर देखूँ तो मेरे पास एक ये टेम्पलेट है, लेट्स से रेज्यूमे 9A, ठीक है। तो मैं इसको अगर यूज़ करके अपनी रिज्यूमे बनाता हूँ तो आप देखें ये बहुत नीट एंड क्लीन बनी हुई है, इसमें उनका प्रॉपर ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशन है, स्किल्स, एक्सपीरियंस, हर चीज़। और जो जो रेज्यूमेस लेटेक्स में बनती हैं, ये एक लैंग्वेज होती है। तो लेटेक की लैंग्वेज कैसे लगती है, फॉर एग्जांपल अगर हम मेरी रेज्यूमे को देखें तो इसके अंदर आपको ये नज़र आएगा कि आपके जो लेफ्ट साइड है इस पे कुछ कोडिंग होती है। तो आप राइट पे कोई भी चीज़ अगर आप सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये एरो पे क्लिक करूँ तो ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोड पे भी चला जाता है। ये मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ जैसे सैमसंग, ठीक है। तो अगर मैं सैमसंग को यहाँ पे चेंज करूंगा, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को लिमिटेड, लेट से मैं यहाँ लिख देता हूँ GmbH, हाँ, ठीक है। सो अगर मुझे ये GmbH यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है तो फिर मुझे फॉर एग्जांपल अपनी रिकम्पाइल पे क्लिक करना होगा। तो जब मैं रिकम्पाइल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख सकते हैं कि GmbH भी लिखा आ गया। तो ये जो लोग वर्ड में आजकल रेज्यूमेस बनाते हैं उससे ज़्यादा नीट एंड क्लीन रेज्यूमे बनती है आपकी फॉर एग्जांपल इस लेटेक्स के प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम जो है नॉर्मली रिसर्चर्स यूज़ करते हैं अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने के लिए, लेकिन इन लोगों ने बहुत नीट एंड क्लीन टेम्पलेट्स बनाए होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को ये टेम्पलेट मुझसे चाहिए हो, जो कि यहाँ पे डिफरेंट गिवन है इनकी वेबसाइट पे RPI की, और वैसे भी ये लेटेक के अंदर ओवरलीफ के अंदर ही टेम्पलेट्स गिवन होते हैं, तो अगर आप न्यू में जाएंगे तो फ्रॉम टेम्पलेट्स आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये चीज़ है फॉर एग्जांपल कि हमें हर 10 साल के लिए सिर्फ एक पेज होना चाहिए रेज्यूमे का। तो आप देखें कि मेरे वर्क एक्सपीरियंस वगैरह सारा मिला के अगर मैं मैक्सिमम मैं 2 पेजेस की कभी भेजता हूँ या 1 पेज की, उससे ज़्यादा नहीं भेजते। ये मैंने एक एक्सटेंडेड थोड़ी सी बनाई हुई है कि अगर कोई डिमांड करे तो मैं उसको भेजता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये ओवरलीफ मेथड कंप्लीट हो गया। अब सेकेंडली हम लोग ये देखते हैं कि कैरियर, कई दफ़ा आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप रिजेक्ट हो जाते हैं, तो आप ये सोचते रहते हैं कि आप क्यों रिजेक्ट हुए। तो आई थिंक कि एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा, एक कंपनी से, मैंने कहा कि मेरा इंटरव्यू भी बिल्कुल सही हुआ था, तो व्हाई डिड यू रिजेक्ट मी। उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम इतनी छोटी कंपनी है कि आपने पहले हुआवे में काम किया, सैमसंग में काम किया, तो आप हमारे पास क्यों काम करेंगे, तो हमने आपका कैरियर का सोच के आपको रिजेक्ट किया। तो कई दफ़ा आप जब रिजेक्ट होते हैं आप ये ना सोचा करेंगे आपके अंदर कोई कमी है। ये भी हो सकता है कि जो जर्मन स्पेशली कंपनीज हैं वो ये देख रही होती है कि आपकी कैरियर के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है या नहीं कि आप उन्हें ज्वाइन करें। और अगर उन्हें लगता है कि आप
का उनको ज्वाइन करने से आपका करियर डाउन हो रहा है तो भी वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं. समटाइम्स यू आर ओवर क्वालिफाइड एज वेल. ठीक है. सेकेंडली ये डिस्टेंस. सो व्हाट इज डिस्टेंस? मतलब ये चीज ये है कि एक दफा मैं मेरे एक बॉस थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने मुझे क्यों रखा, और भी बहुत सारे एप्लीकेंट्स इतने जबरदस्त आए हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बाकी रिज्यूमेस भी दिखाई. उन्होंने कहा नहीं यार तुम करीब रहते थे इसलिए तुम्हें रख लिया. तो फिर मुझे समझ आई, मैंने कहा इनके लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, बस मैं करीब रहता हूँ इसलिए रख लिया. तो कई दफ़ा ये जर्मन्स ऐसी चीज़ें भी देख रहे होते हैं जो आपकी नॉलेज से अलग होती है. कई दफ़ा लोग समझते हैं कि हमारे पास तो सिर्फ एक स्किल है, बहुत थोड़ी सी नॉलेज है, हम कैसे सेलेक्ट होंगे. अरे भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो वो देख रहे होते हैं. ठीक है. तो ये चीज़ हमने कवर की. अब हम इसमें बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे जो डिफरेंट इंटरव्यूज़ हुए थे वो किस तरह के थे. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने एप्पल में जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ वॉक करें. वो क्यूपर्टिनो उनका कैंपस है वहाँ अमेरिका में. तो मैं उनके साथ वॉक कर रहा, तो मुझे वो कहने लगे आपने एप्पल की कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल की है. तो उस वक्त मैं एंड्रॉयड का यूज़र था. तो मैंने उनसे कहा कि हाँ. मैंने दिल में सोचा कि एप्पल की तो मेरे पास आईफोन तो है नहीं, तो एंड्रॉयड का ही मैं यूज़र हूँ. लेकिन मैंने एक दफ़ा आईपैड खरीदा था, लेकिन वो आईपैड मैंने अपनी अम्मी को भेज दिया था पाकिस्तान. तो फिर मैंने खुद नहीं यूज़ किया हुआ था. तो मुझे एप्पल वालों ने कहा कि जी अच्छा आप कोई फीचर बताएं जो आपके पास प्रोडक्ट है. मैंने हाँ कह दिया. ठीक है. हालांकि मुझे हाँ नहीं कहना चाहिए था क्योंकि आईपैड मेरे पास तो नहीं था, वो तो मैंने घर भेजा था. तो उन्होंने कहा कोई फीचर बताएं एप्पल का जो आपको अच्छा लगता है. मैंने कहा नोट्स. ठीक है. तो थोड़ी देर बाद उन्होंने नोट्स के बारे में क्वेश्चन किया तो मुझे वो समझ नहीं आया. हालांकि जो बंदा मेरे साथ वॉक कर रहा था वो एप्पल का आई मैसेजेस बनाने वाला बंदा था, एंडी वायरस. और उस बंदे ने इवेंचुअली जब मैंने उसे कहा कि आप मुझे कमरा तो दिखा दें इंटरव्यू का जहाँ पे जाना है. उन्होंने कहा इंटरव्यू तो हो गया, ये जो हम वॉक कर रहे थे आपके साथ यही इंटरव्यू था. तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका इंटरव्यू है इट बिगिंस द मोमेंट यू एंटर द बिल्डिंग, द मोमेंट यू गो टू रिसेप्शन टू प्लेसेस. आपका सब चीज़ ऑब्जर्व हो रही होती है, स्पेशली बड़ी कंपनीज में. इसे अगर माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू लेते हैं तो इन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या किया कि 5 राउंड्स थे, पूरा दिन चलता रहा, और एंड में एक बंदा बिठा दिया जो बंदा ना हिलता था ना आंखें झपकाता था, और उसकी बहुत बड़ी दाढ़ी थी, और उसने अपने लैपटॉप के पीछे अजीब अजीब स्टिकर्स लगाए हुए थे. और वो बंदा मेरी किसी बात पे ना हाँ करता था ना करता था, कुछ भी नहीं बोलता था. और मुझे 1 घंटा उसके साथ इंटरव्यू करना था. जो बंदा ना हिलता है ना बोलता है ना आंखें झपकाता है. तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता फील हुआ कि ये मेरे इस चीज़ को चेक कर रहे हैं कि मैं कोलीग्स के साथ कैसा टीममेट हूँगा, क्या मुझे गुस्सा आता है, क्या मैं एजिटेटेड फील करता हूँ. तो इंटरव्यूज़ कई दफ़ा नॉलेज के अलावा भी चीज़ों पे होते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप अपने कोलीग से कैसे एडजस्ट करेंगे, टीम बेस्ड कम्युनिकेशन. इसी तरह जो मेरा गूगल में फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू हुआ तो 1 घंटे का क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व कर भी लिया और हर चीज़ सेट थी. तो एंड में मैं सेलेक्ट नहीं हुआ. तो मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे सेलेक्ट क्यों नहीं किया. उन्होंने कहा ये आपने 1 घंटे के अंदर सॉल्व किया है, बाकी एप्लीकेंट्स ने 55 मिनट में 50 मिनट में सॉल्व किया था. तो ये चीज़ आप अपने नज़दीक ज़रूर रखें कि फॉर एग्जांपल इंटरव्यू एक कंपटीशन होता है, वो आपका और डिफरेंट लोगों का मुकाबला है. तो उस मुकाबले में आपको अपनी बेस्ट प्रेजेंट करनी है. इवन अगर आपकी नॉलेज इनफ है, अगर आपका एक्सपीरियंस इनफ है, तो भी आपको ओवर द बोर्ड जाके उनको अपनी बेस्ट देनी है. तो स्पेशली फॉर गूगल काइंड ऑफ इंटरव्यूज आपको बहुत ज़्यादा कह लें कि प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, और स्पीड जो है वो प्रिपरेशन से ही आती है. अगर आप वैसे ही चले जाएंगे क्योंकि आपको नॉलेज बहुत है, आप वैसे ही सोचते हैं कि मैं जवाब दे दूंगा, नहीं, आप थोड़ा सा प्रिपेयर करें तो आपकी स्पीड बनेगी, आपकी फ्लो बनेगी, कॉन्फिडेंस बनेगा. ठीक है. सो नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं वो कुछ इंटरव्यू मिस्टेक्स देखते हैं. तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था इंटरव्यू मिस्टेक्स पे, तो हम इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. ठीक है. तो ये कुछ इंटरव्यू मिस्टेक्स हैं जो मैं आपसे बताना चाहूँगा. कि एक तो नॉट टॉकिंग एनर्जेटिकली, ये बहुत डाउनर है. इंटरव्यू जो होता है वो एक कन्वर्सेशन नहीं है, वो आपकी गपशप नहीं है, वो आपके दोस्त नहीं है. आप एनर्जी से बोलें, एंथुजियाज्म से बोलें. ठीक है. इसी तरह अगर आप डायरेक्ट नहीं है अपने आंसर्स में, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई सवाल पूछता है ना, तो आप उसके जवाब को थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं, फिर असल आंसर की तरफ आते हैं. इंटरव्यू में ऐसे नहीं होता. इंटरव्यू में ये आपको डायरेक्ट होना पड़ेगा आंसर्स में, क्योंकि ये चीज़ कई दफ़ा मिशन क्रिटिकल सिचुएशंस में बहुत काम आती है. जैसे जब मैं हुआवे में था तो यहाँ पे हमारा जो सॉफ्टवेयर था वो लिटरली ऐसी रियल टाइम पे यूज़ हो रहा था साइबर सिक्योरिटी में, कि अगर मैं अपना जवाब दूसरे जुमले में बताता हूँ पहले जुमले की जगह, तो इससे किसी का नुकसान हो सकता है. ठीक है. तो ये जो इंटरव्यू में यही चीज़ें वो चेक कर रहे होते हैं कि आपका डायरेक्ट आंसर आप दे रहे हो या आप घुमा फिरा के आंसर दे रहे हो. ठीक है. और फिर ये भी होता है कई दफ़ा कि इंटरव्यूअर आपको जानबूझ के एक ऐसा सवाल देता है कि जिसका आपको जवाब नहीं आता, तो उसके अंदर डोंट मेक अप एन आंसर. ठीक है. उसके अंदर आप ये बताएं कि आपको नहीं आता, या आप ये बताएं कि मैं गूगल कर लूंगा. ठीक है. लेकिन आप कभी भी इंटरव्यू में ये नहीं कर सकते कि आप गलत आंसर बता दें या अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करें. ये बहुत बड़ी मिस्टेक है. स्पेशली जर्मन्स को ये बहुत बुरा लगता है कि डिसऑनेस्टी. ठीक है. फिर ये है कि डोंट टॉक कैजुअली लाइक अ कन्वर्सेशन, क्योंकि ये एक इंटरव्यू है. इसी तरह
आप उन्हें जज मत करें कि कई बच्चे जाके इंटरव्यू में बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये आपने सही क्वेश्चन नहीं पूछा, आप मेरे बारे में ये पूछते ना तो वो ज्यादा बेहतर था। आप उन्हें जज करने आए हैं, वो आपको जज करने आए हैं, तो सही है, तो आप उन्हें प्लीज जज मत करें, ये बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग है, वो आपको फौरन रिजेक्ट कर देंगे। इसी तरह अगर आपको आंसर पता है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो भी आपका आंसर नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, और यहाँ पे कई लोग ड्राइविंग लाइसेंस भी इसीलिए फेल करते हैं, गाड़ी चलानी आती है, कॉन्फिडेंट नहीं होते तो फेल हो जाता है। तो ये चीज़ है, कॉन्फिडेंस भी आपका मैयर हो रहा होता है, तो आप उसमें जवाब दें और बड़े कॉन्फिडेंस से दें। और इसी तरह वो आपसे पूछते हैं आपको अपनी नेक्स्ट जॉब में क्या चाहिए, तो अगर आपको नहीं पता कि आपकी नेक्स्ट जॉब में आपको क्या चाहिए, तो फिर भी वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, बेशक आपके पास नॉलेज हो भी। तो जैसे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर ली, जावा भी कर ली, तो अब मेरे पास दो दो स्किल्स हैं, तो कई दफ़ा मुझे वो आखिरी क्वेश्चन यही पूछते थे कि आप जावा के इंजीनियर हो या एआई के इंजीनियर हो, आप एआई करना चाहोगे या जावा, तो मैं कहता था मैं दोनों करूंगा। तो जिस चीज़ पे मैंने कहा दोनों करूंगा, वो मेरा सब रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मुझे बाद में समझ आई कि नहीं, किसी एक फील्ड को आपको चुनना होता है, और ये चीज़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि नॉलेज से रिलेटेड नहीं है। तो इसी तरह जैसे कुछ सवाल बड़े स्टूपिड होते हैं, एंड में अगर आप वो आपसे कहते हैं आप सवाल पूछेंगे हमसे कुछ, अगर आप ये पूछने लग जाओ ना कि आप होम ऑफिस ऑफर करते हो, या मैं ऑफिस के बाद काम कर लिया करूं, लेट कर लिया करूं, मैं 2 महीने वेकेशन ले सकता हूं, तो बस इस तरह के सवाल मत पूछिए, ये स्टूपिड क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आंसर राउंड भी होता है ना, वो भी जज हो रहा होता है, उसके अंदर भी आपको पॉइंट्स दे रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह आप इतने ज़्यादा डेस्परेट मत हो एट अ जॉब इंटरव्यू कि आप उनसे कहें जी नहीं मुझे आप रख रहे हैं या नहीं, एंड में पूछें ये वो, इस तरह की चीज़ें नहीं करें। आप अपने इंटेग्रिटी रखें, और ये चीज़ रखें कि आप नहीं भी सिलेक्ट होते तो इट्स ओके फॉर योर लाइफ, ठीक है। अब वहाँ पे दोनों पार्टीज का इक्वल बैलेंस होना चाहिए, आप अगर वहाँ बहुत नीडी होंगे तो फिर मसला होगा। इसी तरह ये है कि आप वहाँ पे ड्रेसिंग कुछ भी कर सकते हैं अगर आप फॉर एग्जांपल, लेकिन आप जो है वो कॉन्फिडेंट होने चाहिए, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई इंटरव्यूज में जैसे प्रोग्रामिंग के इंटरव्यूज होते हैं, आपको उन्होंने रखना है एज अ प्रोग्रामर है, आप सूट पहन के जा रहे हैं, तो वो आपका एक मिसमैच हो रहा है इन्वायरमेंट से, तो आप उनके इन्वायरमेंट को समझें कि प्रोग्रामर्स नॉर्मली जीन्स हुडी इस तरह की, मतलब थोड़ा तो अपना एक्स फैक्टर रखें, ठीक है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल वो आखिर में पूछते हैं कि जी व्हाट मेक्स यू वांट टू जॉइन अस, ठीक है, या अपने नेक्स्ट रोल में, तो इन सब चीज़ों ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं, इनकी पहले से आप तैयारी करके जा सकते हैं, ठीक है। और एक ये होता है कि सारे इंटरव्यूज शुरू में आपसे यही एक ही सवाल पूछते हैं सबके सब, टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ, तो इसकी अच्छी तरह तैयारी करके जाएं। इसमें आप अपनी टॉप 3 चीज़ों के बारे में बताएं जो जिंदगी में आपकी टॉप 3 चीज़ें हैं, क्योंकि जिस इंप्रेशन से आप इंटरव्यू शुरू करते हैं उसी पे खत्म होता है। तो शुरू में ही बहुत अच्छा इंप्रेशन अगर आप दे देंगे अपनी फर्स्ट, और ये लाइन कोई भी नहीं प्रिपेयर करके जाता, वहां जाके हिस्ट्री सुनाने शुरू कर देते हैं जी मैं पहले बैचलर्स किया, फिर मैं दुबई रहा, फिर मैं अमेरिका गया, फिर मैं जर्मनी, नहीं इस तरह नहीं होता। आपकी जो टॉप 3 चीज़ें हैं पहले आप वो बताएं, ताकि आपका एक इंप्रेशन सेट हो, और वहां रुक जाएं, बताने के बाद अगले को भी बात करने का मौका दें, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल जो है इंटरव्यू के अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपने बारे में बहुत ज़्यादा बात ना करें, ठीक है, बस उतना जवाब दें जितना आप से पूछा गया है, ठीक है। सो ये कुछ मेरे पास टिप्स थी जो इंटरव्यू, अच्छा कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो अगर आप इंटरव्यू से पहले, फॉर एग्जांपल एक मैं इंटरव्यू में गया और मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे आंसर्स दिए और एंड में रिजेक्ट हो गया, मैंने कहा जी मैंने तो सब सवाल सही जवाब दिए थे, तो उन्होंने कहा कि आप 5 मिनट लेट आए थे। तो ये रिचुअल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप कहें कि नहीं जी मेरी ट्रेन मिस हो गई थी, मैं 5 मिनट लेट, नहीं ऐसा नहीं होता। सिमिलरली ये भी है कि अगर आप शुरू में कॉफ़ी पी के जाएं, कुछ मेडिटेशन करके जाएं, ठीक है, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके जाएं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो सकता है। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि आप कितने नर्वस हैं इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। So finally, just to conclude this presentation, I would like to say that what someone lacks in talent can be more than made up for in self-motivation, self-direction and follow-through. तो even अगर आपका इंटरव्यू बुरा भी हुआ है, आप उनको एक follow-up letter लिख सकते हैं, not too many, but just to confirm from them कि how is it going, या if they need further documentation from you. और motivation भी आपकी बहुत काउंट करती है कि आप उस रोल के लिए कितने मोटिवेटेड हैं, और आपकी डायरेक्शन बहुत काउंट करती है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो बिल गेट्स कहता है इफ यू कांट मेक इट लुक गुड एटलीस्ट मेक इट, इफ यू कांट मेक इट गुड एटलीस्ट मेक इट लुक गुड, यानी कि आप उसको कम से कम अच्छा प्रेजेंट तो करना की कोशिश करें। कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं रिज्यूमे में क्या क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने मेरी इतनी नॉलेज है सब कुछ, नहीं, यू हैव टू मेक इट लुक गुड। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, फिर भी आप चीज़ों को अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करें, ठीक है। सो मेरी कंक्लूजन ये है कि 80% आपका जो सिक्योरिंग का जॉब है वो जस्ट प्रिपरेशन और प्लानिंग से की जा सकती है। So that's it from my presentation. If you have any questions, please write to us or speak. And yeah. Thank you so much, Dishan, for sharing your insights. It was really helpful for all of us. Guys, अगर आप लोगों के कोई questions हैं तो we have our guests there, so please move ahead.
or Yes, please. Jawad, I know कि ये थोड़ा सा late हो गया, but can I also take like 5 minutes to for maybe? sure, yes, for sure. अच्छा, so I mean, ये फातिमा और Zeehsan, thank you very much. उन्होंने काफी डिटेल में प्रेजेंटेशन बनाई है. Before I start, मैं आपको से इंट्रोडक्शन देता जाऊं अपना. मैं PhD कर रहा हूँ यहाँ पे TU Munich में, और इससे पहले मैंने इंटेल में कुछ काम किया था. उससे पहले मैं पाकिस्तान में नेटसोल में काम किया था, एंड देन मैंने लम से मैंने मास्टर्स किया हुआ है, एंड देन या आई डिड सम ऑफ माय बैचलर्स UT लाहौर से. सो आई मीन दैट्स व्हाट माय प्रोफाइल इज. तो अब मैं बेसिकली यहाँ पे PhD कर रहा हूँ, तो लाइक मुझे काफी एटलीस्ट लाइक हफ्ते में कोई 3 से 4 मुझे सीवीज जोन सी हैं वो मुझे रिसीव होती हैं कि लोग अप्रोच करते हैं कि थीसिस सुपरविजन के लिए. तो अब मैं आपको बेसिकली मैं व्हाट आई विल शो इज लाइक आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स के एक अच्छी सीवी क्या होती हैं और एक बुरी सीवी. क्योंकि अब वो जो अभी फातिमा बात कर रही थी कि जब एक पोजीशन ओपन होती है उन पे मल्टीपल आपको सीवीज रिसीव होती हैं, और जो रिव्यूअर होता है या जिसने हायर करना होता है उसके पास मुश्किल से 1 मिनट होते हैं एक सीवी को देखने के लिए. अब नाउ आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स के अच्छी सीवी क्या होती हैं और एक बुरी सीवी क्या होती हैं. लेट मी स्टार्ट ब्रॉडकास्ट. So you guys can see my screen, right? Right? Can you see my screen? Yes, we can. Okay, let me show you. अपन हम स्टार्ट करते हैं एक सीवी एग्जांपल से कि बुरी सीवी क्या होती है. लेट्स सी. अब ये एग्जांपल है एक बुरी सीवी की, क्योंकि इसमें मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है. इस बच्चे ने मुझे अप्रोच किया कि लाइक मुझे एक थीसिस चाहिए, लेकिन उसने मुझे अपने कुछ नहीं बताया कि वो कर क्या रहा है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, वो करना किस में चाहता है. मुझे इससे देख के सिर्फ ये आइडिया हुआ है कि वो बैचलर्स कर रहा है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट. और उसको लैंग्वेज कौन सी बोलता है. अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास जो डिफरेंट अवेलेबल टॉपिक्स हैं उसमें से कौन सा टॉपिक मैं इस बच्चे को दूं. मैं तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ बैड सीवी. लेट्स सी अनदर बैड एग्जांपल. एक सीवी है, राइट. अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि यू कैन सी अ लॉट ऑफ वेस्टेड स्पेस. अब इसमें इतनी ज्यादा वेस्टेड स्पेस है, और उसने अब जो इंफॉर्मेशन भी प्रेजेंट की है इट्स नॉट इन ऑर्डर. मेरे लिए ये रीड करना बहुत मुश्किल है. मुझे नहीं समझ लग रही कि उसकी कौन सी चीज एजुकेशन कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है, किस जगह के ऊपर फिनिश हो रही है, एंड देन इट्स लाइक रियली हार्ड टू रीड, राइट. और मेरे पास अब मुझे दिन में 3 सीवीज रिसीव हुई है, तो मेरे पास अपने जिंदगी में और बहुत करने का काम है. अब मेरे लिए रीड करना बहुत मुश्किल काम है. ये जो इसने 2 पेजेस की ये सीवी बनी है, इट कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू 1 सिंगल पेज if he had used this space more wisely. So yeah, this is like one more example of a bad CV. Now I'll give you some example of a good CV. Maybe I think it's better in this direction. So I mean, अगर आप इसमें देखें तो इसने this was a good CV. I mean, उसने अपनी पूरी information दी है. I mean, एक और चीज जो कि I guess like it was somehow missed. ये ऊपर एक प्रोफाइल का एक सेक्शन होता है which I really like. I mean, हर बंदे की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है, but I really like this profile. प्रोफाइल वो होती है कि आपकी जो 1 पेज की समरी है, जो 1 पेज की आपकी या 2 पेज की या 3 पेज की सीवी है, उसको ना वो एक पैराग्राफ के अंदर ना समराइज कर देती हैं. तो इंस्टेड के मैं जाके एक सेक्शन में देखूं, आप प्रोफाइल में आप मुझे सारी चीजें हाईलाइट करके कहते हैं कि आपकी ये मैक्सिमम एजुकेशन ये है, ये आपका अभी करंट रोल है, अभी आप क्या कर रहे हैं, जो आपकी प्रोफाइल है, जो एक आपके पूरे करियर आपका 5 साल का, 10 साल का, 3 साल का जो भी आपका एक्सपीरियंस है, उसको आप 2 से 3 लाइनों में समराइज करें, ताकि ये जो आपकी पूरे जो सीवी आपके पूरे प्रोफेशनल करियर का एक उसका वो होता है, एक समरी होती है. और जो सीवी की समरी होती है वो तो प्रोफाइल में आ जाती है. वो मुझे बता देती है कि लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, और कि आपकी व्हाट कैन यू डू. सो ये चीज आपकी इसमें प्रोफाइल में आ जाती है. उसके अलावा एक और गुड एग्जांपल ऑफ अ सीवी, एक ये काफी अच्छी एग्जांपल है. सारी इंफॉर्मेशन जो सी है उसने यहाँ पर अपनी उसने स्पेस उसने यहाँ पर वेस्ट नहीं की. उसने आपकी जितनी भी सारी स्पेस है उसको उसने बड़े प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है. उसने यहाँ पर अपनी उसने जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो दी, नाम लिख दिया, सारी एजुकेशन, टेक्निकल स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस. आई कैन क्लियरली सी एक सिंगल पेज के अंदर उसका जो भी एक्सपीरियंस था उसने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया. उसने अपने सारे प्रोजेक्ट से वो एक्सप्लेन कर दिए कि वो क्या क्या उसने प्रोजेक्ट्स किए हैं, एक लाइन के अंदर उसने एक्सप्लेन कर दिया, which is like a really good, it's a really example of a really good CV. Well, let's see one more. Yeah, there's like one more CV. So this is again like example of a good CV.
on a header उसने अपनी सारी जो contact information दे दी. There's no wasted space here. यहाँ पे अब check करें उसने सारी education explain कर दी, professional experience explain कर दिया, projects explain कर दिए. So again, this is an example of a good CV. So again, अगर उसको मैं थोड़ा सा अगर summarize कर दूं, इस पूरे जो मैंने 5 मिनट के मैंने आपको थोड़ी डेमो दी है, अब सीन आपने है तो ये कि जो CV is basically is a way to sell yourself. It's not only to sell yourself. आपने अब जो रिक्रूटर होते हैं या कोई भी जो सीवीज देख रहा होता है ना, उसके पास एक बिग पूल ऑफ सीवीज आते हैं, उसके पास ना काफी ज्यादा सीवीज आती हैं. आपने उन सारी सीवीज में स्टैंड आउट करना, तो आपकी सीवी विजुअली भी अपीलिंग होनी चाहिए. इट शुड बी लाइक विजुअली अपीलिंग. और उसके अलावा जो आपकी इंफॉर्मेशन है ना, वो सारी की सारी एज लिटिल स्पेस एज पॉसिबल के अंदर ना वो रिप्रेजेंट भी करनी चाहिए. So मैं sorry मैंने आप लोगों का थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, but this is like again some things that I wanted to show you कि जो real world example में आती हैं कुछ example of good CV and bad CVs, तो वो मैं बस आपको छोटा सा run down देना चाहता था. So yeah, thank you very much, and then I would stop share. So थैंक यू जवाद भाई. गाइस लेट्स मूव टुवर्ड्स Q&A. तो अगर किसी के सवालात हैं, आई गेस कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी चैट पे भी मौजूद है, बट आई वुड प्रेफर कि आप अपना माइक ओपन कीजिए और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लीजिए ताकि वी कैन क्विकली आंसर देम. हेलो जी वासे. जी. एक क्वेश्चन में पूछना था, अगर फॉर इंस्टेंस हम लोग किसी जगह अप्लाई कर रहे हैं और हम लोग जिस यूनिवर्सिटी में करंटली इनरोल्ड हैं उसकी एक डिमांड है, प्रेस्टिजियस है वो यूनिवर्सिटी, तो क्या हम लोग जो अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करते हैं उसके अंदर अपना एक जनरल ईमेल जो जीमेल वाला होता है उसकी जगह हम लोग एक यूनिवर्सिटी के ईमेल को यूज कर सकते हैं वहाँ पे? Maybe I can take this one. Wase, the only I would say prerequisite is कि आपका जो email address है वो formal हो, and it should be easily recognizable that it's yours. Like I think Zeehsan gave a very good example के what an email address should not look like. उसमें कोई nicknames वगैरह या फिर कोई character names ना हो, as long as it's your own email address and it's like professional, then there is no harm in using an email address that's from your university. And also one thing would be that you're actively checking it in a way that it's not dormant. आपको पता हो कि जी वहाँ पे मुझे emails आ रही हैं और मैंने check करनी है, and if someone will reach out to me, I will actually be able to get back to it. So that's the only reason. You can use it. It's not a problem. And just one more question, sorry. If an organization is asking for your profile picture separately, so can we upload a resume which does not include a picture of your? Sorry, I didn't get the question. If a company is asking for your profile picture separately in a separate JPEG format, and so can we upload a separate resume which does not include a profile picture but includes the text information more? I think even if you upload a resume that has the same picture, then it's fine. The only thing is कि sometimes it happens कि जब आप कोई ATS applicant tracking system use करते हो, जिस तरह आप कह रहे हो, उसमें वो अलहदा से कहता है कि जी आप अपनी एक picture upload कर दें. So basically, just maybe to give you an insight into ये हो क्या होता है पीछे कि whenever you apply through an ATS, sometimes at bigger corporations वो आपका separately एक मतलब candidate account बना देते हैं. तो sometimes it happens कि उसके लिए just for the candidate account they want a picture and they cannot pick it up from the resume. But it's totally fine कि आप अगर even when you're sending a resume जो कि जिसकी मतलब जिसके अंदर आपकी अपनी जो profile जो CV picture है उसके अंदर है, तो even that is fine. और आप उसको separately भी upload कर सकते हो. Thank you so much. You're welcome.
मैं इसमें यही ऐड करूंगा कि फॉर एग्जांपल सिंस द स्टार्ट ऑफ माय करियर मैंने अपनी रेज्यूमे पे कभी पिक्चर नहीं रखी, अलग से अपलोड किया है। तो कई दफ़ा रेज्यूमेज आपकी फ़ोटोग्राफ के बगैर भी होती हैं लाइफ में और वो चल भी जाती हैं। सो एडिंग दैट टू थिंग्स। I'll also chime in. I mean, I think मैं दोनों की बात से एग्री करूंगा, ज़िशान और फातिमा दोनों की जो आंसर दिए। होता ही है कि लाइक आई गेस ज़िशान इज फ्रॉम लाइक टेक साइड, तो टेक साइड के ऊपर ना वो चीज चल जाती है, टेक साइड के ऊपर आपकी ना थोड़ी इनोवेटिव सीरीज चल जाती है। लेकिन जो नॉन टेक साइड्स है ना, वहाँ पे जर्नी एटलीस्ट जो मैंने, खैर मैं खुद टेक साइड का हूँ तो लाइक मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन जो मैंने सुना है वो होता ये है कि आपकी जो नॉन टेक साइड है ना, वो थोड़ी प्रेफर करती है यूरोप पास सीवी को, जो कि पुराने जमाने की वो उसमें पिक्चर्स भी होती है तो वो उसको थोड़ा रिजिडली फॉलो करती हैं। लेकिन जो टेक साइड है उसके ऊपर आई गेस ये जो नॉन पिक्चर वाली सीरीज होती हैं वो भी चल जाती हैं। और दूसरी, आपने जो पहले आपने क्वेश्चन किया था वो अपने ईमेल एड्रेस का, तो अगर आपकी आई एम सॉरी सॉरी आई वाज सेइंग sorry, I live right next to the fire brigade station. So जो आपने उसकी बात की थी, उसकी जो ईमेल एड्रेस की बात की थी कि आपकी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, तो आप हमें, अगर आपके पास एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है तो आप उसको ना बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने बजाय कि सिर्फ ईमेल में शो करें। ठीक है, आई मीन ऑफ कोर्स इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप अपनी जो सीवी है उस पे अपनी इंस्टीट्यूट का ईमेल एड्रेस डालें, लेकिन अगर आपके पास वो अच्छी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है तो उसको और बेहतर तरीके से सीवी के अंदर हाईलाइट भी करें उसको। तो अगर वहां पे हाईलाइट करेंगे तो आई मीन सिर्फ ईमेल एड्रेस पर डालने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आई एम नॉट सो श्योर। और दूसरा उसका एक नुकसान ये होगा कि फॉर एग्जांपल अक्सर ये कहा होता है आप कहीं पे अप्लाई करते हो और वो फिर आगे सीवीज शेयर भी करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सीमेंस में अप्लाई करोगे तो वो अपनी सीवीज आगे डिफरेंट रिक्रूटर्स या किसी रिक्रूटर के साथ अपनी सीवी शेयर किए हैं तो आगे डिफरेंट कंपनीज के साथ शेयर करती हैं। तो हो सकता है कि आपने भी सीवी में अपने इंस्टीट्यूट का ईमेल एड्रेस तो डाल दिया हो, लेकिन 5 साल के बाद वो सीवी किसी और बंदे के पास गई, किसी और इंस्टीट्यूट में गई, किसी और कंपनी में गई, उसने देखा कि इट्स लाइक अ नाइस सीवी, लेकिन उस टाइम आपके पास अपनी इंस्टीट्यूट का ईमेल एड्रेस नहीं होगा। तो इसलिए मैं ऑलवेज रिकमेंड यही करता हूँ कि राइट योर ओन, लाइक जो आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस है आप उसी के ऊपर वही लिखें सीवी के ऊपर। Got it. Am I allowed to ask another question? Sorry. Go ahead. Sure. आप लोगों ने ऑल्दो बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह भी स्केड्यूल कभी किए होंगे, अभी रेज्यूमेस भी काफी देखे होंगी। एनी कंपनी इन जर्मनी करंटली राइट नाउ जो कि इंट्रोडक्टरी वीडियोस डिमांड कभी करती हो कि एक अपना इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करके एक वीडियो के फॉर्मेट में हमें सेंड करें? This is actually a very new trend because there's also a trend in recruitment के जो cover letters होते हैं they're becoming voluntary. In the past you might have seen that cover letters were compulsory, but it's also like how a trend is changing. So basically there are some companies who do ask for a pre-recorded video. Usme basically I think they will ask you to make a video for 1 minute or 1.5 minutes, not more than that. And you essentially have to kind of give an elevator pitch. Just stick to top 3 reasons why you think that you're the best fit for the company and the role. And I think like 1 minute में आप इससे ज़्यादा बता भी नहीं सकते. So as a rule of thumb, just stick to like top 3 very crisp points about why you can be the potential ideal candidate for the role. And of course, like try to have a good quality of the video, the audio, and like a neutral background and so on, and try to look into the camera and try to be presentable and of course like well spoken. Okay, thank you so much. There's a question in the chat जो कि basically इसमें पूछा है कि LinkedIn Premium के benefits क्या हैं, like should we go for it, is it worth it to have it? और एक second question है कि जो objective statement होता है CV में, profile statement objective, वो कितना जरूरी है? Maybe I can answer LinkedIn Premium because I use it. Yes, so LinkedIn Premium के I think benefits ये होते हैं कि you can look at different jobs that would
because looking at it from a company's perspective, companies also put money behind certain job campaigns, and based on how much the budget is for a certain campaign, they will show you the jobs on top of your search results. So when you're like using LinkedIn Premium, it's a higher probability कि आपको job ज़्यादा नज़र आए. उसके अलावा you can also, for example, write a lot of in-mails to recruiters, जो कि आपके second level network या फिर third level network में भी हैं. You can also, I think, currently there's a limit of 500 in-mails per month. So you can basically reach out to 500 people. I would say there are, if budget is not an issue, then I think it is worth it because it does improve like visibility. For example, if you also use this feature of easy apply on LinkedIn, just how the CV would look like is it will land your CV on top of like, many other CVs that you will receive. So there are some I would say benefits to it, and I would say that if you can afford to have it, then it's worth it for at least like a small duration. एक शॉर्ट टिप मैं ऐड करता चलूं कि अगर आप लिंक्डइन का प्रीमियम ले लेते हैं, उसको एक महीना लेट से रन होने देते हैं और फिर उसको कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करते वक्त लिंक्डइन आपको ये चॉइस देती है कि आप 50% पे करके उसको रख लें. सो अगर किसी ने प्रीमियम खरीदना भी है तो वो खरीद के उसको कैंसिल अगर करें तो वो 50% की ऑफर उनके लिए एक्टिव हो जाती है और फिर वो हाफ पैसे पे करके प्रीमियम रख सकते हैं. सो दैट्स हाउ यू डोंट पे टू मच फॉर लिंक्डइन. परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि करियर जो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है. Maybe Fatma can say something about it. Yeah. I know that we have different views about career statement. I think coming maybe from a recruiter perspective, it's I do understand that it should ideally give you a very good crisp summary of like what the person has worked on and so on, but the only thing, if you do want to add like a career statement, yeah, a profile statement, is it should not be something that's very generic. What I unfortunately see a lot in, I would say a lot of South Asian CVs is it's just like the same text that's copy pasted, that a highly motivated individual in the IT sector, focused on backend development, API development, and blah 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 blah. So it's just like you can write it. It should not be like an entire paragraph, but it should really reflect your core strengths and your core competencies. It should not be something that that you took off of someone else's LinkedIn, because recruiters, we read about like more than 200 of these on a daily basis. So if you say कि you can justify कि मैं इसको खुद लिखूंगा और इसको मैं creatively लिखूंगा and it's really authentically for my own profile, then it's good to have it. Otherwise, if you feel like that you might get a bit lazy trying to draft it for yourself, then please don't add it. Yeah, मैं भी इसमें यही बोलना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल जो जर्मन रेज्यूमेज मैंने जहाँ जहाँ भी अप्लाई किया, अगर आप उसमें ये लिखते हैं कि आई एम रियली गुड एट दिस या आई एम वेरी मोटिवेटेड, तो ये जो वेरी, रियली या रियली गुड, ये क्वांटिफाइबल नहीं है. सो स्पेशली इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में आप अगर कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं लाइक वेरी गुड एट दिस, तो दिस इज अ बमर, आपकी रिज्यूमे रिजेक्ट भी हो सकती है. इसलिए जो प्रोफाइल लिखने का सेक्शन है वो बहुत रिस्क ज्यादा है, फायदा कम है. क्योंकि फायदा इसलिए कम है कि बाकी रिज्यूमे फिर उसी चीज को एक्सप्लेन कर रही है, तो रिपीट कर रहे हैं आप चीजें. तो रिज्यूमे देखने वाले के पास है ही 1 मिनट, तो उस 1 मिनट में वो आपकी प्रोफाइल पढ़ें या रिज्यूमे के थ्रू जाएं. मेरे ख्याल में तो रिज्यूमे अगर आप बहुत प्यारी बनाएं तो आपको डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. और डिस्क्रिप्शन लिखते हुए आप बहुत रिस्क में पड़ जाते हैं, क्योंकि आप कोई भी ऐसी चीज लिखते हैं जो अगले मैनेजर के दिमाग में लगता है कि नहीं, ये तो वेरी गुड क्या होता है, ठीक है. सो दे रिजेक्ट यू. सो या, बी केयरफुल अबाउट इट. या, दैट्स
किसी का और कोई क्वेश्चन है तो यू कैन ओपन माइक एंड क्विकली आस्क इट. Jawad, I do see a question in the chat. It's I think from Zakir. So he's basically asking, where can we prepare the best CV? Your recommendations. I have a Europass CV. If you have no experience, what should we do in that case? So yes, I would say Europass CVs are good, but they're very generic, and that's something that will not catch my eye if I'm looking at more than like hundreds of such CVs. So there are other tools as well. For example, Google has some free templates that you can use. That's a good one. And if you want to get like more creative, then there's also another tool called Visual CV. Let me quickly write it for you guys. Visual CV. So basically, I mean, with Visual CV, what you can do is it's a subscription based model. I mean, it's not that expensive, but it's also okay. For example, आप या आपके friends मिलके, if you want to all pitch in and buy the subscription for 1 month, then you can have like different profiles, and then you can make like all your own CVs as well. So वहाँ पे you have a lot of different templates for adding a picture. The formatting is very easy. The page breaks are really convenient. So I can also highly recommend कि अगर आप अकेले नहीं खरीदना चाह रहे, because I think it costs like around 50 euros a month. So आप you can have like some friends with you, और आप मिलके भी वो subscription खरीद सकते हैं, and easily like 6 to 7 people can also use it. So that's the tool that I personally use for my own CV, and I've been using it since the last, I'd say, 5 years, and I'm quite happy. So I also see that such kind of like CVs, they also really stand out. ओके ओके सो मेरा नाम बिलाल है और मैं बेसिकली अरासमस का स्टूडेंट हूँ और मैं ये आप कह लें ये फेस कर रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ भी कर रहा हूँ ये अप्लाई फॉर जॉब और इंटर्नशिप, तो वो मुझे ये एक ही आ रही है रिजेक्शन कि आप के तुम के अंदर या फिर आप एज रेगुलर ये स्टूडेंट नहीं है, या फिर अगर मैं यूनिवर्सिटी में भी जो पार्ट टाइम वो होती हैं जॉब्स मैं करता हूँ, तो वो यही मुझे क्या कर वो मतलब कर देते हैं कि आप तो एरास्मस के स्टूडेंट हैं और आप मतलब ना के छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि जो मेरा यहाँ पर वो आने का एम है जर्मनी का, वो यही है कि मैं लॉन्ग टर्म में यहाँ पर रहूं। तो इस चीज को मैं स्पेशली मैं कैसे अब मैं करूं टैकल। हालांकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी है ये है ऐसे आप कह लें डेटा साइंटिस्ट, लेकिन मैं ये स्पेसिफिकली ये मैं जो एक हर्डल है ये थैंक यू मैं फेस बिलाल, कर रहा आपका हूँ। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि एज एन एरास्मस स्टूडेंट आप क्योंकि यहाँ पे परमानेंटली जर्मनी में नहीं रह रहे हैं, तो जी रिक्रूटर्स आर कंसर्न कि किस तरह से आपको जो जॉब लैंड की जाए, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपने मूव आउट हो जाना है। तो आई वुड आस्क कि किस तरह आप लोग इसका आंसर करेंगे, फातिमा, जवाद, निशान। जी
जी, थैंक यू वेरी मच बिलाल, मुझे आपका क्वेश्चन आ गया समझ। आई वुड से कि आप किस तरह इसको लिख किस तरह रहे हैं अपनी सीवी पे, लाइक आर यू सेइंग कि यू आर एन एरास्मस एक्सचेंज स्टूडेंट, या फिर यू आर लिंकिंग इट टू टूम? Because that also makes a lot of difference ke, for example ke your core organization is TOOM and you're like, you know, doing an Erasmus exchange and so on. So or dusra ye ke, are you also highlighting the duration of until what and what time frame will you be an Erasmus exchange student? जी मैं बिल्कुल सेम, मैं ऐसे ही, ये आप कह लें, मैं सीवी के ऊपर है, ये मैं मेंशन कर रहा हूँ कि मैं इधर जो अभी हूँ, ये मैं एज ए इरास्मस का स्टूडेंट हूँ, और ये मैं नेक्स्ट सेमेस्टर सितंबर तक मैं हूँ। और वो, अगर वो मेरे से, तो वो पूछते हैं कि आप एज ए लीगली आप यहाँ पर आपको काम अलाउ है, तो मैं उनको बताता हूँ जी कि बिल्कुल है मुझे, लेकिन फिर भी वो एक स्टेज के बाद वो रिजेक्ट वो देते अगर मुझे। अच्छा, मैं इसमें कुछ ऐड करता चलूँ। इनका सवाल जो है हम्म, वो ये है कि इनको रिजेक्शन बहुत आ जाती है और वो ये कहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म नहीं रहेंगे, तो इस वजह से आप जो है वो क्यों अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसमें दो तीन बातें क्लियर कर दूं, ये बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जांपल, जो स्टूडेंट जॉब्स हैं, अभी आप एक इनरोल्ड स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो मुझे भी शुरू में स्टूडेंट जॉब्स नहीं मिलती थी। तो फिर क्या हुआ कि एक मेरे दोस्त ने कहा यार आप कल आ जाना, इंटरव्यू दे देना। तो वो दोस्त ही मेरा मैनेजर बैठा हुआ था, उस मैनेजर दोस्त का दोस्त था। तो ये जो स्टूडेंट जॉब्स होती है ना, ये दोस्ती दोस्ती में भी लग जाती होती हैं। तो आपको जो करने की जरूरत है ना, वो आप पाकिस्तानी कम्युनिटी में लिंक्डइन पे सर्च करें। लेट से कि आप किसी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, आप डेटा साइंटिस्ट हैं, डेटा साइंटिस्ट अलियांस को बहुत रिकॉर्ड होते हैं, या अलियांस के अलावा बहुत सारी कंपनीज को रिकॉर्ड होते हैं। तो उनमें जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनको ढूंढें, उनसे कहें भी मेरी जॉब करा दो स्टूडेंट की, तो उनको भी रेफरल का बोनस मिलता है। वो आपके लिए तगो-दो करते हैं, आपकी रिज्यूमे मैनेजर के डेस्क पे रख के आते हैं प्रिंट करके, और फिर आपकी जॉब स्टूडेंट की इस तरह से लग जाती होती है। तो आप रेफरल का शायद सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, एक तो मुझे ये लग रहा है। और दूसरा ये कि अपना डेटा साइंटिस्ट के तौर पे तो आपकी ये जो पोजीशन है, इसके अंदर आपका फ्लॉन्ट कर सकते हैं आपके आपने क्या बनाया है अभी तक। तो आप अपनी नेट पे एक प्रोफाइल बिल्ड करें गिटहब की, उसके अंदर डिफरेंट जो भी आप कोड लिखते हैं वो आपके कंप्यूटर पे नहीं पड़े रहने चाहिए, वो इंटरनेट पे लोगों को दिखाएं कि मुझे ये कोड करना आता है। तो चार पांच टॉप के प्रोजेक्ट्स को आप क्लोन करें गिटहब पे, उनको दिखाएं, और फिर वो आपका काम देख के आपको खुद से अप्रोच करने शुरू कर दें। मतलब आप इंटरनेट पे एक प्रेजेंस बनाएं, आपकी प्रेजेंस इतनी अगर लो होगी ना, तो फिर लोग उस पर यकीन नहीं रखते, मतलब कि आपको आता भी है या नहीं। मतलब लेट से आपके रिज्यूमे पे लिखा हुआ है आप डेटा साइंस का प्रोजेक्ट करना जानते हैं, लेकिन जब तक आप ऑनलाइन उसको एग्जिबिट नहीं करेंगे, उसकी एक एग्जीबिशन होगी, उसका लिंक गिटहब का होगा आपके प्रोजेक्ट्स का, वो आप ऐड करके उनको अपनी कवर लेटर में साथ भेजें कि जी देखें मेरे 5 प्रोजेक्ट मैंने किए हुए हैं, मुझे आते हैं। तो जब लोगों को यकीन हो जाता है कि आपको स्किल आती है, तो वो जरूर आपको जॉब दे देते हैं उस टाइम पे। तो ये यकीन दिलाना आपका काम है, प्रेजेंटेशन आपका काम है, ठीक है। दैट्स ऑल। ओके श्योर। मैं भी इस पे थोड़ा सा चाइम इन करूंगा। बिलाल, आपको इसमें कोई डिस्करेज होने की बिल्कुल भी कतई तौर पर जरूरत नहीं है कि आपको, इट मेक सेंस एज वेल। फॉर एग्जांपल, को मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो कि जिसकी ड्यूरेशन 1 साल की है, और मेरे पास अगर आपकी सीवी यार मुझे पता चले कि आपने सितंबर में वापस आ जाना है, यू विल नॉट बी माय फर्स्ट चॉइस, राइट? क्योंकि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो साल तक चलना है, और आपने मुझे 6 महीने के बाद छोड़ जाना है। तो आई वुड लुक फॉर अ पर्सन जो कि थोड़ा ज्यादा फिजिबल हो मेरे लिए, जो कि मेरे पास 7 साल रुपए से। बट देर आर स्टिल, आप थोड़ी सी अपनी जो जॉब हंट है उसको कंटिन्यू रखें, और थोड़ा सा उसको और ब्रॉड करें। तो ये भी हो सकता है कोई ऐसी कंपनी है जिसको इसी ड्यूरेशन के लिए ही कोई बंदा चाहिए होगा, तो उसके लिए फिर आप परफेक्ट चॉइस होंगे। तो इसमें कतई तौर पर आपको ना डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। इसको अपनी जो जॉब हंट है उसको कंटिन्यू रखें, और आई एम श्योर यू विल एबल टू फाइंड समथिंग जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा आपके लिए भी और कंपनी के लिए भी।
बिल्कुल। मुझे एक बंदा मिला, वो म्यूनिक में BMW में काम करता है और दूसरे शहर से आया, तो मैंने उससे कहा तुम कैसे सेलेक्ट हुए BMW में? तो उसने कहा मैंने 50 टाइम्स अप्लाई किया, 50 टाइम्स। और फिर मैंने उससे कहा कि तुम एक इंटरव्यू के बाद तो वो बहुत अरसे तक फिर दोबारा नहीं लेते इंटरव्यू। उसने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं एक इंटरव्यू देता था, अगले हफ्ते दूसरा, सेम कंपनी में BMW में, अगले हफ्ते दूसरा दूसरा दूसरा। और उसने इतनी दफा इंटरव्यू दिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कि एंड में सब लोगों को पता लग गया था कि यार ये चाहता है जॉब, इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लो। वो फिर एडजस्ट हो गया। तो ये आपकी मोटिवेशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। हाँ, ओके, श्योर, परफेक्ट। जिशान माइट बी इन द अदर वे अराउंड। मुझे एक ही कंपनी से 5-6 दफ़ा रिजेक्शंस भी आई हैं, सो समटाइम्स दे आर एडिक्टेड के आपको उन्होंने नहीं रखना तो नहीं रखना। सो कम्प्लीटली द अपोजिट मीनिंग फ्रॉम व्हाट यू एक्सप्लेन्ड। हाँ जी, बिल्कुल ये है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं से एंट्री आपकी हो जाती है मार्केट में। आप किसी छोटी कंपनी से स्टार्ट कर लेते हो, स्टार्टअप से, किसी दोस्त यार के स्टार्टअप से, फिर आहिस्ता आहिस्ता यू मूव अप, सो यू बिल्ड योर पाथवे समहाउ। तो 0 से 1 मुश्किल होता है, फिर 1 से 1 मिलियन बहुत ईजी हो जाता है, ये चीज़। Exactly. Thank you, everyone. That was really a nice podcast. Just a last query might be, आप सबका एक्सपीरियंस भी है और उस लिहाज से might be क्वेश्चन है to all the participant के how would you make yourself a need to the specific company? आप इस चीज़ को इंटरव्यू में कैसे टैकल करोगे कि कंपनी को लगे कि वाकई ही इज़ द रिक्वायर्ड वन, या आप खुद को एज ए कैसे सेल करोगे कि आप उनकी एज ए नीड कंसिडर हो सको? फातिमा, आप कुछ कहना चाहेंगे? I think what I would essentially do is that I would surely try to understand कि company का सबसे बड़ा pain point क्या है. It could be related to the industry that they're working in. It could be related to the sector that they're working in. It could be like, anything that you can find about them off of LinkedIn. But personally, you have to really identify कि company का सबसे बड़ा pain point क्या है, वो क्या tackle करने की कोशिश कर रहे हैं, and try to do some research around that same concept. Or once you are in an interview with the company, within the first, I would say 10 minutes, try to also highlight briefly कि जी that's what I think कि आपका pain point ये है, and if I'm selected, or like if I get an opportunity to work with you through my roles, this is like what I can essentially deliver in a certain amount of time. So I would say कि the approach there should be कि just trying to understand कि where your interviewer or where the company is currently standing, सबसे ज़्यादा मुश्किलात क्या हैं कंपनी को, और आपका जो स्किल सेट है, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो किस तरह इफ़ेक्टिवली ट्रांसलेट हो सकते हैं इन अ वे कि वो वाले जो सारे जो चैलेंजेस हैं उनको मिटिगेट कर सकें. सो as a rule of thumb, you should not give them more than 3 pain points, because then it also doesn't leave a positive impression. You're not seeing like any positivity in the company itself. It has to be very, I would say, tactful. You are showing like a person side that's also empathetic. Yes, I do resonate कि आपका pain point क्या है. And I think for example, if you are applying for a project management job, you can say कि अच्छा, in the past, the company that I was working at, we had maybe like a similar situation, and that's what I did as an individual to contribute. Okay, how can we actually like move forward in a very solution oriented manner. नहीं, मैं भी इसमें बस यही ऐड करता चलूं कि जो राइट कैंडिडेट होता है ना, कंपनी उसके लिए 10,000 पाउंड भी भरती है रिक्रूटर को कि इनको ढूंढ के लाएं, और वो आपके पीछे भी पड़ जाते. फॉर एग्जांपल, मैंने एक दफ़ा गूगल में इंटरव्यू दिया, 2 महीने बाद वो मेरे पास फिर आ गए. मैंने कहा गूगल के अंदर मैंने अभी अभी दिया है, उसमें एक असूल है गूगल का कि 6 महीने तक आप दोबारा इंटरव्यू नहीं दे सकते. उसने कहा नहीं नहीं, हम ये असूल तोड़ने के लिए आए हैं, आप दोबारा से इंटरव्यू दें. फिर 2 महीने बाद फिर से इंटरव्यू. मतलब वो अपने असूल तोड़ रहे हैं किसी एक कैंडिडेट के लिए. तो आप इतने अच्छे बन सकते हैं बाय प्रेजेंटिंग योर सेल्फ ऑन द इंटरनेट, बाय हैविंग अ पर्सनैलिटी. कुछ हॉबीज रखें, कुछ चीज़ें. मेरा डिलॉयट में इंटरव्यू हुआ तो वो मुझसे पूछ रहे हैं अच्छा आप पियानो भी बजाते हैं, आप गिटार भी बजाते हैं. उनके लिए ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट थी. तो ये चीज़ है कि आप जो है ना अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करें और अपना एक ओवरऑल प्रोफाइल बिल्ड करें, तो कंपनीज आपको भाग भाग के लेंगी. कंपनीज को आपकी ज़रूरत है. जर्मनी में तो बंदे ही थोड़े हैं, जॉब ज़्यादा हैं. तो आप इस चीज़ पे बिलीव रखें कि आप उनको आपकी बहुत ज़रूरत है कंपनीज को, और आप अपने आप को अगर राइटली सेल करें तो डेफिनेटली कंपनीज वुड गो वे बियॉन्ड. आपका इंटरव्यू क्लियर ना भी हो, वो आपको रख लेंगे.
मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, क्योंकि people are wanted, you know, so definitely the answer is yes. मतलब you can be a wanted person in the industry. Yeah. I'll also chime in. अब देखें, अब किसी कंपनी ने कोई वेकेशन कोई अपनी वैकेंसी अगर उन्हें पब्लिक की है, तो इसका मतलब है कि उन्हें एक बंदा चाहिए जो कि उस काम के लिए चाहिए। अब ये आपके ऊपर, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उस पर थोड़ी सी R&D करनी है। आपने ये देखना है कि वो जो कंपनी है, जो उन्होंने पोजीशन अपनी ओपन की है, वो किस काम के लिए की है, और आप उस काम को कैसे कर सकते हैं। जब जनरली कोई वैकेंसी ओपन होती है, साथ उसमें की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब रिक्वायरमेंट्स भी लिखी होती है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, आपके डे टू डे जॉब क्या होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, और आपने ये करना है कि आपकी जो प्रोफाइल है, आपने उसको उसके साथ ओवरलैप करना है जो कि वो मांग रहे हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन डेवलप योर नीड इन द कंपनी। Perfect. Hello. Thank you for your time. I would like to ask a question. I'm a shift manager at a hotel, and now I would like to apply for project management jobs. So is it worth mentioning this job experience, because this is a odd job? Thank you. Fatima, please. For sure. For sure. I think this is something that a lot of people feel very, I would say, hesitant, and they feel really uncomfortable about it. But I would say that as a shift manager, there are such amazing skills that you can learn. So, for example, you're like, you're scheduling multiple timetables, you're looking into multiple calendars, you're dealing with a lot of different people. Sometimes you have to go above and beyond, you have to reflect a lot of flexibility. So I would surely say कि आपको present करना आना चाहिए, essentially कि आपने ये जो सब कुछ किया है, like how do you actually translate it on a piece of paper. But at the same time, there is no harm, there is no damage if you're writing about any odd job. Even I see, I have actually hired people for like internships and so on, just based off of their attitude. And in the past, they only have had like, they were working for like some food delivery companies and so on, some like, these grocery hailing apps and so on as well. So आपको बस present करना आना चाहिए. You should really look into कि आपने जो job की है उसमें आपने सीखा क्या है, और वो जो आपने सीखा है आप उसको पेपर पे किस तरह ट्रांसलेट करते हो. But there is no harm in writing कि जी you're working as a shift manager at a hotel. I think it's an amazing reflection of your skill, और कि आप कितना, it also, one thing it also shows is कि how quick of a learner you are. कि for example आपने एक field में काम किया and then you're quick to exploring your other options as well. So I would definitely encourage कि even if someone is here working for Flink, for Volt, for Lieferando, for any like even ये sales assistants वगैरह की जो jobs होती हैं, they're really customer facing, and companies, they really look at these skills as well, because at the end you have to really interact with people, you have to also sometimes maybe interact with difficult people. So these are all very important skills that can easily be translated to other jobs very well. Thank you so much, ma'am. Perfect. So I guess we have extended a lot of time. So thank you so much to our guests Mohammad Zeehsan, Fatima Sakhawat and Jawad Tahir for sharing insights. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. और अगर आप लोगों के जो ऑडियंस है उसमें से अगर किसी के और भी क्वेश्चंस हो, तो जो हमारा मेन पोस्ट है फेसबुक पे, आप उस पे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, and then we'll try to answer. So thanks a lot everyone for joining, and thanks again to our guests. So have a good day, have a good Sunday. All right, guys. Thank you. Thank you so much for joining us. And yeah. Thank you, everybody. Have a nice evening. Take care. Thank you everyone. Bye bye. Bye. Allah Hafiz.